क्लास 7 ज्योग्राफी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 5 वाटर के बारे में कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं वाटर के बारे में क्या है। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा वाटर ही पाया जाता है। अर्थ और वाटर की तुलना करते हैं तो वाटर हमारे पास ज्यादा है, सॉइल कम पड़ती है। चलिए देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स इसके। So due to the heat of sun, water changes into gaseous form. The source of water are river, stream, glacier, etc. On the earth, the amount of water is more than land. The ocean water is always movable. Due to air negligence, we are going to destroy the water resources. On the shore of the ocean, the water always ups and downs. The high tides help in fishing. Water cycle, the circulation of water through which it changes its condition and circulate through hydrosphere, atmosphere and the earth is called water cycle. Terrarium, it is artificial enclosure for keeping small house plants. Resources, these things which have the capacity to fulfill our needs are called resources. Tsunami, the harbor waves which rise on the ocean. Waves rise and falls of ocean water alternately at its place is called waves. ये वेव्स आपको दिखाई दो तरह की हैं, एक कोल्ड वेव है और एक वार्म वेव है। तो वार्म वेव को रेड से दिखाया गया है और कोल्ड को ब्लू कलर से दिखाया गया है। यहाँ देखिए कोल्ड नीचे दिखाई दे रही है आपको चलती हुई, और ऊपर की साइड अगर ध्यान से देखोगे तो रेड अधिकतर चलती हुई दिख रही है, कहीं कहीं ब्लू भी चल रही है, मोस्टली इसमें रेड दिख रही है आपको। तो ये सारे जो है आपको लर्न करने होते हैं उसके। ये वही सब चीजें दिखाई दे रही हैं, ओशन का दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये फ्लड्स है इसका, यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है क्या क्या, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जो है इंडियन ओशन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर भी ऐसे अदर पार्ट है इसका मैप का। इसमें ट्रॉपिक कैंसर और ये क्या नाम ओशियन दिखाई दे रही है। साउथर्न अटलांटिक ओशियन है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन है ये। तो वाटर के बारे में ही शो कर रखा। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आंसर है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। What is salinity? So answer है the most of salt present in the ocean water which decide the salt amount of water is called salinity. What is tides? आंसर है ये tides के बारे में बताना है ना, क्या है tides? So due to the movement of water near the shore of ocean, the rise and fall of water is called tides. By standing near the seashore, we can see the tides easily. Right main thing for evaporation. Answer है for evaporation, high temperature and cleanliness of air is needed. What do you understand by evaporation? So answer है the process of conversion of water into water vapor in the presence of instant sunlight or instant heat is called evaporation. What are the sources of water on the earth? So you can see here answer है water sources। first है यहाँ ocean, second river, फिर stream, glacier, iceland and poland. What is underground water and how it is helpful
for plants? So answer है the rain water goes down the surface of the earth through plateaus and flows under the earth. It is called underground water. In the desert place, when there is no monsoon rain and the scarcity of water is shown, then the roots of the plants fulfill their need of water through the underground water. What is the first symbol of coming of tsunami? So answer है the first symbol of coming of tsunami is wind blowing at high speed and forms huge waves. How many times the tides rise in the ocean? Answer है in the ocean the tides rise 2 times daily. What is rules of sea waves? So answer है warm current originated near equator and moves towards pole. On the other hand, cold current originated near poles and moves towards tropical or lower latitude. What is the benefit of high tides? Answer है the high tides help in navigationalization. Next है when the high tides comes. Answer है the high tides comes on no moon day and full moon day. Which are responsible for high tides? Answer is the sun, the moon, and the gravitational force of the earth are responsible for high tide. With the help of map and the atlas, make a chart of important rivers, streams and sea of the world. So यहाँ पे rivers हैं, देखते हैं कौन सा है। ये मिसिसिपी है, अमेजन है, निगर है, कॉन्गो है, ऑरेंज है, नील है और डेन्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, वांगहो और डार्लिंग। स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। स्ट्रीम में कौन सा है? ग्रेट बियर है, ग्रेट सालवे है और विनीपेग है, सुपीरियर है, मिशिगम है, हुरॉन है, एरी है और ऑन्टेरियो है, विक्टोरिया है और सॉल्ट लेक है। चलिए सी की बात कर लीजिए। सी में क्या है? कैरिबियन है, आर्कटिक है, ब्लैक है, कैस्पियन है, अरेबियन है, ईस्ट चाइना है, साउथ चाइना, नॉर्थ, रेड एंड कोरल। Why is winter important for us? Suggest some way in which water can be conserved. First in your home, second in your school. So a water is important for us. So answer है first life provider, second food provider and third basis of production of industries and fourth है mean factor as environment. B में है give some ideas for conservation of water. So in our house में क्या करना है? रेन रनिंग का सीजन बनाना है। ये पूरा ऊपर जितनी भी है रूफ का जो वाटर है सब एक जगह कलेक्ट करके अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे नीचे का पार्ट जो वाटर है रिचार्ज हो जाता है। ये आंसर है फर्स्ट है द रेन वाटर फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ आवर हाउस हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन द रिजर्वियर और टैंक वाटर कैन बी सेव्ड। सेकेंड है वाटर कैन बी सेव्ड थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग system. Through this process, the level of underground water can be increased. ये है बी दिया हुआ है इन स्कूल, ये दिखाया हुआ है आपको। यहाँ भी देखो दिखा रखा है वाटर के लिए शो कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर भी वाटर के लिए देखो शो कर रखा है, प्लांटेशन को वाटर को जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर भी है वाटर कंजर्वेशन का जो है स्लोगन बनाया हुआ है और we will not waste the water and save water through plantation and make care of it.
Make an album of sea source tsunami comes in different parts of the world. सो आंसर है ये सुनामी का सीन दिया हुआ है देखो बच्चों, और ये क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं उसकी वजह से यहाँ पे शो कर रखा है। एक और सीन दिखाई दे रहा है आपको, ये भी सुनामी का सीन है, ये भी सुनामी का ही सीन है, ब्रिजेस वगैरह सब पड़ जाते हैं इसमें। Make a chart of waterfalls, separate the cold and हॉट वाटरफॉल। सो आंसर है वाटरफॉल्स देखते हैं हम, हॉट में लेते हैं गल्फ स्ट्रीम वाटरफॉल, फिर ये इक्वेडोर वाटरफॉल, ब्राजीलियन वाटरफॉल, आउगलेस वाटरफॉल, और ये है कुरोसोई वाटरफॉल, अलास्का वाटरफॉल। कोल्ड में जरा देखिए कौन कौन से हैं, कैलिफोर्निया वाटरफॉल, लेब्राडोर वाटरफॉल, कैनरीज वाटरफॉल और पेरू वाटरफॉल, फेकलैंड वाटरफॉल, वेंजुला वाटरफॉल और ओएसिस वाटरफॉल, और एक और है डब्लू ऑस्ट्रेलियन यानी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वाटरफॉल। ये हैं आपके पास। Now, what is precipitation? So, answer है precipitation is the process through which the water comes down to the earth in rain form. What is water cycles? Answer है the process which water continually change its form and circulate between ocean, atmosphere, and land is known as water cycle. What are factors affecting the height of the waves? आंसर है फैक्टर्स ले रहे हैं, कौन कौन से हैं, पहले अमाउंट ऑफ वाटर है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऑफ द सन एंड मून, और स्पीड ऑफ विंड। ये तीन फैक्टर्स हैं इसके। चलिए फोर्थ है विच फैक्टर इफेक्ट द मोमेंट ऑफ ओशियन वाटर। सो आंसर इज हियर द फैक्टर दैट इफेक्ट द मोमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर, फर्स्ट है लैंडस्लाइड इनसाइड द ओशियन, सेकेंड है अर्थक्वेक वोल्केनो, और थर्ड है स्पीड ऑफ विंड्स। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड? आंसर है द rhythmic rise and fall of the ocean water twice a day is called tide. The main reason for tide is the strong gravitational pull force of the sun and the moon. Due to this gravitational force, long and short tides comes. What are ocean currents? So answer है the stream of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction are called ocean currents. Ocean water is salty. रीजन है ये, गिव रीजन है, तो देखते हैं कि ओशियन वाटर साल्टी क्यों होता है। सो आंसर है इन द ओशियन वाटर व्हेन द लेवल ऑफ फिश फ्रेश वाटर decreases and the process of evaporation rise, then the amount of salinity increases in water, so the ocean water is salty. The quality of water is deteriorating. So आंसर है यहाँ पे देखो क्या है deteriorating के लिए, the quality of water is deteriorating day by day as the reason is the mining of industrial effluents, garbage or untreated water, chemicals, fertilizers, etc., which directly affects the water sources, so water is deteriorating. Now take the correct answer. First है ये the process by which the water continually change its form and circulate between ocean, atmosphere and land. So that is called as water cycle. Second है generally the warm ocean currents originate near. So कहाँ होता है? इक्वेटर पर।
The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called, that is called as tide. Match the following. फर्स्ट है हमारे पास कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक। सेकेंड है टाइड, इट इज द बी पीरियडिक राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर। थर्ड है सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव। एंड फोर्थ है हमारा ओशियन करंट, सो स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। The name of one river is hidden in each of sentences below. Spot it. So example है Mandriya, Vijay Lakshmi and Surinder are my best friends. So answer है Ravi. The snake chamber, busty stable where horses are housed and the piles of wood all catch fire accidentally. Hint, another name of river Brahmaputra. ये है तीस्ता। बी में है द कॉन्फ्रेंस मैनेजर पुट पेड मटेरियल फॉर रीडिंग एंड अ पेंसिल फॉर ईच पर्टिकुलर 8 पार्टिसिपेंट्स। हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट्स में देखो क्या दिया हुआ इन्होंने। हिंट्स में है अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सो दैट इज द पद्मा, द नेम इज पद्मा। सी में देखते हैं आइदर ज्वेलियस और एंगर कॉज अ पर्सन्स फॉल। हिंट्स जो है नेम ऑफ अ जूसी फ्रूट एंड दैट इज द ऑरेंज। डी है ये भवानी जर्मिनेटेड द सीड इन अ पॉट। हिंट दिया हुआ है लुक फॉर हर इन वेस्ट अफ्रीका, दैट इज द नाइगर। नाइगर है ये है आई एम अ जोनल चैंपियन नाउ डिक्लेयर द एक्साइटेड एथलीट। हिंट दिया हुआ है द रिवर दैट हैज द बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड, वो है अमेजन, सो दैट आंसर इज अमेजन। ये देखिए द टिफिन बॉक्स रोल्ड डाउन एंड ऑल द फूड फेल इन डस्टी पॉथहोल्स। हिंट्स है ये रसिया इन इंडिया एंड जर्नी थ्रू पाकिस्तान, सो दैट इज द इंडस, द नेम इज इंडस। Malini learned against the pole when she felt that she was going to faint. Hint है her delta in Egypt is famous, so that is the Nils. That name is Nils. Samtha mesmerized everybody with her magic tricks. So hints इसमें London is situated on her estuary, so that is the Thames. ये है Thames। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In this neighborhood, please don't yell owner of these house like to have peace. Warned my father when we moved into our new flat. हिंट्स है कलर, तो कलर है कौन सा, येलो कलर है। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, मार्क ऑन गो इन, सेड द टीचर टू द लिटिल बॉय इन केजी क्लास। हिंट्स है ये रेम्स विद बेंगो, बेंगो का होता है कोंगो, ये दैट इज द कोंगो। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। सो यहां देखते हैं वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये है 22 मार्च। ये याद रखना है बच्चों, आपको बहुत ज्यादा इसको लर्न करके रखना है यार। इसके बाद सेकंड है द एवोपरेशन ऑफ वाटर इज डन बाय,
ये है सन के द्वारा होता है, ये इट इज डन बाय सन। The salt which is used in cooking is that is the sodium chloride, और इसका फॉर्मूला जो होता है NaCl होता है इसका फॉर्मूला। नाउ फोर्थ है सुपीरियर स्वीट वाटर लेक इन इज इन, तो ये है नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ है द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी पर लीटर इज इजराइल डेड, इजराइल डेड, तो देखो सी इज कहा, ये 340 ग्राम है। ये डेड सी का पूछा गया है, तो डेड सी में 340 ग्राम है, ध्यान में सबसे ज्यादा पड़ता है उसके अंदर। इसके बाद 6 नंबर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइड्स इन वन डे इज, कितने होते हैं? केवल 2 ही टाइड्स बनती हैं। गल्फ स्ट्रीम वाटरफॉल इज द वाटरफॉल ऑफ ओशियन, कौन से ओशियन में है? अटलांटिक में है। नंबर 8 है द प्लेस विच वाटरफॉल फेल्ड ड्यू टू सुनामी, सुनामी कहाँ हुई थी? ये इंडीरिया पॉइंट, ये इंडीरिया पॉइंट है, यहां पर भी है, ये देख लेना इसको। राइट द कैरिकुलेशन ऑफ ओशियन, दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ ओशियन है। तो फर्स्ट है वेव, सेकंड है टाइड्स एंड थर्ड है फॉल्स। Who is beneficial from tides per day? So answer is the fishermen are beneficial from tides per day. Where perfect fish bank are created? So answer है the perfect fish bank are created where the hot and cool water falls mixed with each other. For example, due to the mixing of Gulfstream and Labrador waterfalls, so the fish bank of the Newfoundland, ये न्यूफाउंडलैंड है, वहां पर है सबसे ज्यादा है। चलिए, विच इज द मोस्ट साल्टी ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? डेड सी है बच्चों, ये द डेड सी इज द मोस्ट साल्टी ओशियन ऑफ वाटर। इसमें आदमी इतना साल्टी है कि इसमें आदमी तैर सकता है आराम से बिना डूबे, अखबार भी पढ़ सकता है, फेमस है इस चीज के लिए। चलिए, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इज ऑन द अर्थ? सो दैट वन इज द 71% वाटर इज ऑन द अर्थ। नाउ राइट द टू सोर्सेस ऑफ स्वीट वाटर, फर्स्ट है रिवर एंड सेकंड है ग्लेशियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉल्स आर इन ओशियन? सो ओशियन फॉल्स है यहाँ, तो सबसे पहले है हॉट वाटरफॉल और दूसरा है कूल वाटरफॉल। ड्यू टू मिक्सिंग द अपोजिट वाटरफॉल देयर इज फॉग, फॉर whom इट इज एन ऑब्स्टेकल। सो आंसर है इट इज एन ऑब्स्टेकल फॉर नेविगेशन। How does the tides affects our life? Answer है first, due to mixing the hot and cold current, it creates fog due to which navigation is affected. It also does not proper for survival of fishes. Second है due to cold current the temperature become low on port. So ports are closed for some months. On the other hand, nearby the seashore, the hot current does not lower the temperature, so the business is not affected. How does the ocean current tides help us? Answer है they help us in trade. Second, for the growth of fish, और third है affect the seashore climate. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, तो आंसर है यहाँ लो टाइड दे रहे हैं और हाई टाइड। पहले लो टाइड को देख लेते हैं। फर्स्ट द लेवल इन द हाई ऑफ वाटर इज लेस, और सेकंड में क्या है द लो टाइड्स कम्स 2 times in a month. High tides is the average height of water level is high. The high tides falls on full moon day and no moon day.
What are the reason behind the existence of oceanic current? Answer है the rotation of earth affects the direction of wind and also affect the wind area of the earth's surface. Due to change in season, the direction of wind also change. So oceanic currents arise. The temperature of ocean and differences in salinity also help to create oceanic currents. The change in currents changes the direction of wind in island, so it helps in existence of oceanic currents. Write the characteristics of warm oceanic currents. So answer is here. First, warm oceanic currents originate near equator and moves towards pole. Second है the warm current effect near the land surface area. Third है the warm current helps to warm the wind and it helps in raining. Fourth है it also help in transportation में भी help करती है. Now describe the water cycle. The water cycle is the very important for us. The lithosphere, hydrosphere, and atmosphere play important role in water cycle. Due to the sun rays, the water of sea ocean goes to the atmosphere through evaporation. It turns into water vapor, and due to condensation, it comes back to the earth in the form of rain. Rain water again moves into rivers, sea and ocean, etc. This process continue again and again, and this is only the water cycle. And इसी water cycle के some कारण due to this water cycle हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है. जिस दिन ये वाटर साइकिल रुक गया हम अपने आप ही रुक जाएंगे. ये इसकी फिगर दिखाई गई है, वाटर साइकिल की बुक में भी दी हुई है. वैसे तो वाटर साइकिल यहाँ बताया गया. ये वाटर साइकिल आपको शो करके दिखा रहे हैं. सबसे पहले यहाँ क्या है, ये ओशन से इवोपरेशन हो रहा है और इवोपरेशन होकर के ऊपर जाते हैं क्लाउड्स में, जाकर क्या है कंडेंस हो जाती है. यहाँ पे कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन चालू होता है और जैसे प्रेसिपिटेशन होता है रेनिंग चालू हो जाती है. तो ये जैसे कि हिल्स एरिया पे हो रही है रेनिंग, तो धीरे धीरे रिवर्स के थ्रू और नीचे फिर से ओशन में ही आ जाती है. दैट इज वाटर साइकिल. ये लेसन यही समाप्त होता है बच्चों. नीचे ये लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे. कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैंने नया वीडियो डाला तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं. मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक थैंक यू. हैव अ नाइस डे.